Hi guys, NTA have released the notification for IIT JEE. So IIT JEE का notification is out for engineering. Now this is also giving us hint for the CMAT exam as well. So we need to understand that क्योंकि एक idea मिलता है CMAT का. So there's a good news, it can be a bad news as well. It can work both ways. So first let's check out the NTA का जो notice आया है. That 1st of March 2022 their online application are invited. Fine. So 1st of March the application starts and the exam is on. So 1st of March application start and application ends by March end, and exam is on 16, 17, 22 April, session number 1, and then May 24 to 25. Yeah, the exam is open for 30 days, and after 15 days of that, from April 16 we have the exam starting. So if I open up a blank sheet here to explain that 30 days ka window time for the notification to apply, you can apply in 30 days window, and after that within 15 days exam will start. So they need only 15 days ka window to assign admit card, to assign the center, everything. So 15 दिन में आपका exam हो जाएगा. Same way it can work for the CMAT as well. So I've taken you here to the CMAT site. So if I look at the CMAT website, the successful submission of the exam is 18th March, 16th Feb to 18th March. They're giving us 32 days ka time, again 30 days ka time with all the correction window and all. 18 March को खत्म होगा. So within 2 weeks, so exam can any day happen around April 7th या April 14th. Yeah, these two dates are April 13th. I think 14th या 13th है. संडे कब है? संडे. होली कब है? होली वाली बात हुई यहाँ पे भी. So April, if I check out the April का month, Sunday is April 10th and 17th. So April 3rd, April 10, April 17. Exam can happen anytime on these days. Plus minus 1-2 week ऊपर नीचे हो सकता है. Now इससे लेट करना will be difficult because 16 onward they have the IIT JEE का time going on. So most probably 17th को नहीं हो सकता. See, they can do it also यार, because उनका सेंटर अलग होता है. तो ऐसा नहीं कि they going to be सेंटर की नहीं मिलेगा, जगह नहीं मिलेगी उनको, कंप्यूटर नहीं मिलेंगे, कंप्यूटर को मिल जाएंगे, ओवरलैप भी हो सकता है, बट मोस्ट प्रॉब्ली आगे पीछे करके. So 10th of April is the most expected date for the CMAT exam. आपका एप्लीकेशन खत्म किया, 2-3 हफ्ते के अंदर एग्जाम कंडक्ट करवा लिया. नाउ इट कैन एक्ट एज अ बैड न्यूज एज वेल, बिकॉज अगर ये टाइम पे वो ना करवा पाए, बिकॉज IIT JEE इज मेन फॉर देम. फाइन, IIT JEE इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम फॉर देम. उसके चक्कर में अगर बोला यार ये वी डोंट वांट टू बुक द स्पेस फॉर दैट, देन एग्जाम माइट हैपन इन मे, बिकॉज मे का पूरा 25 दिन 24 दिन उनके पास खाली है स्टार्टिंग का. So if exam is not happening around 10th of April, then exam will happen around May first week. Yeah, let's say May 10th, which will be quite late for everyone. So if you ask me, I'm gonna bet everything on 10th of April. आपको क्या लगता है? Please do comment. But seriously यार बहुत डिले कर दिया भाई, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है यार, दे दो यार, डेट दे दो यार. फाइन, कोविड चला गया अंकल. अंकल को भी लग रहा है कोविड आएगा. एग्जाम का डेट दे दो हमको. सो दैट्स द एक्सपेक्टेड डेट फॉर द CMAT एग्जाम. फाइन, अगेन आप अपनी बात करो. यू हैव 3 टारगेट्स इन फ्रंट ऑफ यू. वन इज स्कोरिंग 200 मार्क्स, सेकेंड टारगेट इज स्कोर ऑफ 250 मार्क्स, थर्ड टारगेट इज स्कोर ऑफ 300 मार्क्स. सो 3 टारगेट्स आर देयर इन फ्रंट ऑफ यू. पहले 200 टच करो, फिर 250 टच होगा, फिर 300 जाके टच होगा. सो 200 इज योर फर्स्ट टारगेट. ऑलराइट, ऑल द बेस्ट.